एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन और हर रोज की तरह आज भी हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर आइदर प्रिपेयरिंग फॉर CLAT और एनी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट इन द कंट्री। बट बिफोर दैट, if you are struggling to find resources to practice every day, then you know that we have launched our Telegram channel जहां पर आपको हर रोज फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए जो आपके वीकेंड्स है। अगर ऐसा है तो आप हमारे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पहले वो क्वेश्चंस मिलेंगे एंड देन उनके आंसर्स यू कैन इंक्लूड देम इन योर डेली प्रैक्टिस एंड इट विल हेल्प यू इमेंसली। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करते टाइम या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम किसी भी तरीके का डाउट आता है, देन यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स। नाउ बिफोर हॉपिंग ऑन टू द टॉपिक फॉर टुडे, अगर आप ढूंढ रहे वन स्टॉप सोल्यूशन गाइस फॉर प्रिपेयरिंग for CLAT or any other entrance test in the country, if you are a law entrance aspirant, then believe me, our paid batch is the one stop solution for you guys, because यहाँ पर आपको हर वो mentorship मिल जाती है, साथ ही साथ वो सारे resources भी मिलते हैं personalized attention के साथ। Now without further ado, let's move on to today's topic और समझते हैं कि हम आज tenses में क्या पढ़ने जा रहे हैं। If you remember, last 4 videos में हमने present tense को cover किया है। We have studied simple present, present continuous, perfect and perfect continuous। आज उन्हीं चारों टेंसेस को हम रिवाइज करेंगे एंड देन वील टुगेदर सॉल्व अ फ्यू एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हमने जो टेंस पढ़ा है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट हैव वी स्टडीड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस? कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए रेगुलरली एप्लीकेबल है, जिसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो प्रेजेंट में तो आप कर ही रहे हो बट पास्ट में भी करते थे और फ्यूचर में भी करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी रेगुलरली, आई रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। ऑल ऑफ दीज आर हैबिट्स, ऑल ऑफ दीज यू कैन से इट्स अ रूटीन, इज रिपेटिटिव। वहां पर हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका फॉर्मेशन होता है गाइस सब्जेक्ट, वर्ब एंड SES प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिंगुलर तो हम ES ऐड करेंगे। अगर ही की जगह दे होता तो हम नहीं करते। Second tense that we did was present continuous tense। present continuous tense में हमने पढ़ा सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं is, am और are। is, am, are के साथ हम यूज करते हैं ING form of verb and then the sentence comes out to be something like this। he is singular तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? is। अगर they होता तो हम क्या यूज करते? आर। सो ही इज ड्राइविंग अ कार। कोई भी ऐसी चीज जो अभी हम प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। नेक्स्ट अप वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बेसिस पर हम हैज हैव को पहचानते हैं कि हैज आएगा या हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल गाइज, गो की सेकेंड फॉर्म होती है went, we all know that, but third form होती है gone। तो हम यहाँ पर third form of verb यूज करते हैं। he क्या है? he है singular तो singular के साथ आएगा has, but he की जगह अगर they होता तो क्या आता? have। correct? he has driven a car। Then we did present perfect continuous। कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में शुरू हुई थी लेकिन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही है तो हम यूज करते हैं present perfect continuous। सब्जेक्ट के साथ has, have, been और continuous है तो ING। he has been studying English for a long time now। we have been studying tenses for the last few classes। Now let's quickly understand कि हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको हमें अप्लाई करना जरूरी है, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। यहाँ पर हमारे को सीधा सीधा बोल दिया उसने कि प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही भरना है बेसिस योर सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है यहाँ पर प्रोनाउंस। तो इनको देखना है, हमारे को जो हिंट्स दिए गए हैं उनको देखना है एंड बेसिस देम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका आंसर क्या होगा एंड देन वी विल डिस्कस। पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस एंड फिर हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। चेक करते हैं हमारे आंसर्स। शी इज सिंगुलर और प्लूरल? शी इज सिंगुलर तो उसके साथ रीड आएगा या रीड्स आएगा? शी रीड्स बुक्स एवरी डे। दे सिंगुलर है या प्लूरल? दे इज प्लूरल, so they eat dinner at 7 p.m. He
works in a bank. The sun rises in the east and I like to swim in the summer. If you look closely, all of these are habits, right? और ये है universal truth. तो कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में एप्लीकेबल थी, फ्यूचर में है और प्रेजेंट में तो है ही, जो चलते आई है, सिमिलर है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, which we did. Now comes present continuous tense. अब वो हमारे को सीधा सीधा क्या बोल रहा है, present continuous tense पढ़ना है. If you remember, present continuous tense का simple सा फंडा था, and that was is, am, are, basis the subject that you have plus ing form of verb, and that is it. तो इसको pause करना और अच्छे से इसको solve करना. I don't want any errors, and then we'll discuss. All right. She is singular, right? So she is studying for her exam right now. They are playing soccer in the park. क्यों? क्योंकि they है plural, and with plural we use are in this tense. They are playing soccer. He is cooking. The children are running. I am watching. Right? Okay, easy peasy lemon squeezy. Let's do another tense. This is present perfect tense. If you remember, present perfect tense का फंडा क्या था? Has, have plus go, went, gone. Gone वाला form. कौन सा था gone वाला form? Third form of the verb. Now let's solve these sentences basis the subject that we have, and we'll discuss the answers there. All right. I के साथ क्या आएगा? Has या have? Have. I have never been to Europe. They have finished. She has visited. We have what? We have eaten. He has read. Now we have present perfect continuous. Something that started when? Past, and still is continuing to be true. For example, we started studying tenses in the past, right? So what can we say? We have been studying tenses for the last few classes. That means has, have plus been plus ing form of verb. Let's do this. All right, they is plural. So they have been playing. I have been studying. She has been waiting for you since 3 p.m. He has been working on his project all day. We have been talking on the phone for 30 minutes. With this, we come to the end of present tense. Now we are left with past and future. Now what I want you to know is कि हर रोज at 9 p.m. इस English marathon में हम फिलहाल discuss कर रहे हैं English grammar. So don't forget to join us tomorrow as well. In the meantime, if you're looking for resources to practice every day, तो आपको क्या करना है? Telegram channel join करना है, और अगर questions हो तो you can reach out to me directly. As I said, these are my social media handles. Ping me. In case I take a little time, then please bear with me. But believe me, I'll get back to you as soon as I can. Till then, keep practicing. All the very best, and I'll see you in the next lesson. Bye-bye.